we start today's topic, okay, here, right? So yesterday we had discussed what is charge, we had discussed what is current, and then we had finished on what is potential at a point, right? Okay, now we had studied in the previous class what is potential, okay, and Archika had told me that I had told you people about this in class 9 also, and she had said that she remembers the expression on my face when I had done work to bring a test charge into the vicinity of another charge, okay. So we had understood that potential at a point is defined as the amount of work done, okay. So we had understood that potential at a point is defined as the amount of work done per unit charge, okay, in bringing a positive test charge from infinity to that point, okay, which means that what is potential? The potential is equal to the work done, W, by the amount of charge we have brought, okay. If we divide it by the amount of charge that we have brought, then it gives us the work done in bringing a unit charge, okay. So that becomes the potential, and we denote it via V, okay. We denote it by a V, so it becomes V is equal to W by Q, right? We had understood this. We hadn't discussed the unit, okay. So what is the unit, okay? If I look into the unit of work, we have studied in class 9 that joule is the unit of work done or energy spent, okay, and we just studied yesterday that the unit of charge is coulomb, okay. So it means that it becomes joule per coulomb, okay. So now in honor of Alessandro Volta, we have named it volt, so 1 volt, okay. So we have understood that 1 volt is equal to 1 joule per coulomb, okay. So that gives us the definition of 1 volt, okay. What is that? It's if that 1 joule of work is done in bringing 1 coulomb of charge from infinity to a point, then we say that the potential at that point is 1 volt. Easy, everybody understood? And this also is a scalar quantity, okay. Right, we had a discussion yesterday, somebody asking me, I think it was Amisha or somebody, Shingarika only, I think. We had discussed, okay, they had asked me that why do we take electric current as a scalar quantity, and I had given the convention, and then I had talked about electrolyte in which charges flow in both the directions, okay. And then I looked up also after the class, you know, I have a habit of looking up if I am not very convincingly answering something, so I looked up, okay, and there I saw that we take it as a scalar quantity also because, okay, suppose now 5 ampere current is coming from this direction, okay, and now suppose 5 ampere current is coming from this direction also, okay, got it. So now this wire goes in front. How much current is going in this wire? How much current is going in this wire, the last one on which my cursor is moving? Okay, so what is the current passing? Okay, let me name it. This is A, this is B, okay, this is C, okay, and this is D. So I say that in the conductor AB I have got 5 ampere currents coming, in the conductor CB I have 5 ampere currents. What is the current going through BD? What is the current going through BD? Quickly tell me. Shingarika, there you get wrong, okay. The current going here is 10 amperes. The current going here is 10 amperes, okay. Archika says 5 ampere. No, I have got 5 ampere current coming from this direction also, 5 ampere coming from that direction also, okay. So it's just adding up algebraically, and what Shingarika did is she tried to find it using vectors, okay. So here you get to know that current has direction also, current has magnitude also, but still we consider it as a scalar quantity because current gets added algebraically, okay. We cannot add it in vector form,
Okay, I am sure you must be pretty convinced now. Okay, we'll do further research and we'll further come up with something more in this. As of now, whatever I got to know, I have shared it with you, and I'm sure it'll enrich your knowledge. Okay, so now we go further. Okay, this we have understood. This also we have done. Okay, V is equal to W by Q, or obviously the work needed to move a charge Q from infinity to a point P where the potential difference is V will be Q into V. Okay, cross multiplication and you get W is equal to Q into V. Now we move forward. Okay, unit also we have done. We have understood that volt is the unit of potential and it is equal to 1 joule by 1 coulomb. Okay. Okay, Amisha says yes sir. What, Amisha? What is? Now she says okay. That was a more logical answer, right? Okay. Kritika says understood. She gives me double thumbs up. Hey, keep on liking. You know, Sukhinder ma'am was telling that the CBSE groups likes you so much. They give you so many likes. This ICSE group, I think you are low on energy. You don't gel with them and all those reasons. Okay, so don't put me in such a situation. If you like it, please like. Okay, so we have seen the definition also. Okay, the potential at a point is said to be 1 volt when 1 joule of work is done in bringing 1 coulomb charge from infinity to that point. Everybody understood this? Okay, so now we go to today. We start this. We had done yesterday. We did a quick recap, and now we go to something new, which is known as potential difference. Okay, now suppose I have to make current flow through 2 points. Okay, I have 2 points A and I have point B. Okay, suppose this is a conductor and I want current to flow from E to B. Okay, so I don't need to know exactly what is the potential at A, and I also don't need to know what is exactly the potential at B. Okay, what can I know? If I know their potential difference, okay, if I know their potential difference, okay, which means if I know PA minus PB, then I get to know whether current is going to flow through them or not. Okay, so now what is the potential difference? It is the same as potential. Okay, whatever work I do in bringing unit charge from point A to B, okay, whatever work I spent in taking a unit charge from A to B is known as the potential difference across the two ends. Got it? So everybody understood? I'll give you an example. Okay, I take it to the Krita screen and then we do it over there. Okay, so we have understood this, that the unit of potential is volt. We have also understood the definition. If 1 joule of work is done in bringing 1 coulomb charge from infinity to a point, then we say that the potential at that point is 1 volt. Okay, and we have given this unit in honor of Alessandro Volta. Okay, in honor of Alessandro Volta, we have given the unit volt to potential. And now we are doing potential difference. Okay, so I have to take suppose I have to take I want a current of 3 amperes. I want a current of 3 amperes to flow through this. Okay, I want a current of 3 amperes to flow through this. Okay, so now suppose that each ampere, okay, for each ampere to pass through this, okay, which means for each coulomb to pass through this, okay, I need joules of energy. Okay, it requires 3 joules of energy. So if 3 amperes have to flow, okay, then what is the potential difference which should be between these 2 points? Okay, so for each coulomb it is 3 volts, which means the total potential difference should be 9 volts. Understood, everybody? Okay, so the work done, which means 9 joules of work will have to do to move 3 coulomb charge. Okay, which means for each coulomb I will be needing 3 joules of work to be done for every coulomb. Got it? Yes, understood?
Okay, so what is the potential difference? The potential difference across these 2 points will be, for if 1 ampere current flows, then it is only 3 volts is required. Got it? Which means 3 joules of energy is needed by each coulomb of charge to travel from A to B. No, you don't need to remember. Amisha says, in whose honor? No, if Amisha does something and then we say that in Amisha's honor we remember this, then I'll ask you, what do you say? Okay, at present there's no need to remember Alessandro Volta. Okay, the unit of potential difference again is volt. Okay, and it is again the same. 1 volt is equal to 1 joule by 1 coulomb. I've shown it to you over there also. Okay, there we have shown 3 joules. Okay, so if one joule of work is done to move a coulomb of charge from one point to the other, we say that the potential difference between the 2 points is 1 volt. Okay, next we go to concept of resistance. Now that we have understood potential difference, we know what is potential. Now let's understand what's resistance before we go to Ohm's law. Okay, now this also we had yesterday discussed, that all conductors are made up of atoms. Okay, and we had discussed that they contain free electrons. Okay, it is the presence of these free electrons which makes a material a conductor or a non-conductor. If there are free electrons, of course it will help the current to pass through it, and if there are no free electrons, then current will not pass through it, then it's a non-conductor. All of you know that, right? So when there is no potential difference applied across this ends, now this is A and this is B. Okay, there's no potential difference applied across A, B. So now what happens, some electrons are coming this side, some are going this side. Okay, similarly this is coming this side, this is going, all of them are moving in haphazard direction. Okay, so they are moving, but there is no current, which means the electrons are not flowing in a definite direction. Okay, as soon as I apply a potential difference, what device is used to create a potential difference? We use a cell or a battery to create a potential difference. Okay, chemical energy is used to push electrons through a conductor. Okay, so now when I apply a potential difference, then all these electrons start moving in a definite direction. Okay, they start moving in a definite direction. Okay, which means all of them now are moving from B towards A. Okay, but now you can see I have put a plus sign in between some of them. Okay, which means that these have lost electrons. This electron which is roaming around, the free electron, okay, has come out from this atom. So now it has a positive charge on it. Okay, which means it is a cation. Okay, so I've got ions and I've got free electrons. Now when the potential difference is applied, ideally if I apply a force, it should start accelerating. Okay, so why does it not accelerate? It doesn't accelerate because now when it starts moving, you see this is in its way, so it collides with this ion. Okay, now it changes direction, it collides with this, it changes direction, it collides with this. Okay, so they gain some kinetic energy, and because of the collision they lose the kinetic energy. Okay, so they're going like this, which means they are drifting. Okay, I in my class many a times say like a drunkard walking. Okay, the drunkard, you must have seen, he collides with a bicycle and he goes to the other side, collides with a wall. He doesn't walk steadily. Okay, similarly the electrons here also, they are not moving steadily. Okay, they are drifting, they collide with ions, they collide with other electrons. Okay, so which means now that a material which has more number of ions in it, okay, which will provide a greater resistance. ज़्यादा भीड़, ठीक है, हम अमीनाबाद के बाज़ार में से निकलने की कोशिश कर रहे हैं राखी वाले दिन या दिवाली वाले दिन. You know how difficult it is. You know, even walking there is very difficult. Okay, there are so many people in front of you. Okay, so if a material has more number of these ions, if the material has more number of these electrons, the collisions will be more.
right? Which means the passage of the current will be more difficult. Okay, so what does this depend on? This depends upon the material, got it, and its make. Okay, अब मुझे पूरा अमीना बाजार क्रॉस करना है तो भैया बहुत दिक्कत होगी, और मुझे अमीना बाजार की एक छुट्टी सी गली से दूसरी गली में जाना है तो आई कैन गो इजीली, राइट? Drunkard walk, yeah, you remember of the previous class. Okay, Archika remembers everything which I had done in the previous class. She says, I remember you walking like a drunkard, showing us how the electron moves in the class. I also miss those things. I hope this passes away, this COVID passes away. I enjoying doing those things in the class more, okay? So I also wish that it passes away and I start those things once again. So we come back now. Okay, so if I have to cross a small crossway, okay, एक गली से दूसरी गली खाली अमीनाबाद की मेन सड़क से होते हुए जाना है तो मुझे दिक्कत नहीं होगी, राइट? मुझे अगर एक गली से दूसरी गली जाना है तो मुझे दिक्कत नहीं होगी अगर इसको खाली यहाँ पे एक सड़क है, मुझे इसको क्रॉस करते हुए जाना है, ओके? लेकिन अगर मुझे पूरी अमीनाबाद की लेंथ क्रॉस करनी है, ओके, सो आई विल हैव मोर ऑब्स्ट्रक्शन, राइट? So it also depends upon the make of the conductor and the material that we'll study in the next one. Okay, let me have a look at your book. What is given next? Okay, concept of resistance we have understood. We have understood this also. The resistance of a conductor depends on the. Okay, so we have understood. Now your book says the resistance of a conductor depends on the number of collisions suffered by the electrons with the positive ions while moving from one end to the other. ठीक है, तो नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस डिपेंड करेंगे मटेरियल के ऊपर, कौन चीज का वो बना हुआ है, ठीक है? दूसरा, द मेक ऑफ द मटेरियल, कितना लंबा कितना चौड़ा. विल टॉक अबाउट दिस इन डिटेल व्हेन वी गो देयर. ओके, एवरीबडी अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस, व्हाई अ कंडक्टर imposes resistance to the flow of electrons. Everybody understood? To the flow of current. Everybody understood? Yes, no, give me a quick yes so that I can start with Ohm's law. Today I am proceeding in time. मैं in fact before time चल रहा हूँ. मैंने ये सोचा था कि मैं 6 बजे तक ये ख़त्म करूँगा और 7 बजे तक ये ख़त्म करूँगा और 6:51 पे मैंने ख़त्म कर दिया. तो आज हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गई, बहुत तेज़ी से जा रहे हैं हम. Shingarikas finally comes and says yes sir, understood. Okay, now we go to Ohm's law. Okay, अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, okay, ये जो करंट है I, हमने कल पढ़ा था, वी रिप्रेजेंटेड. ओके, अमीशा ऑल्सो सेज यस सर, अंडरस्टूड. फाइनली तुम लोग लेट क्यों रिस्पॉन्ड कर रही हो आज? स्मार्ट गर्ल्स रिस्पॉन्डिंग लेट. ओके ओके, सो वी और आई, और अभी हमने रेजिस्टेंस पढ़ा. वी डिनोट रेजिस्टेंस बाय आर. ओके, तो इनके बीच में एक रिलेशनशिप है और ये रिलेशनशिप हमें दी ओम ने. ओके, पूरा नाम क्या था ओम का? जॉर्ज साइमन ओम. ठीक है, ये एक फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम. ओके, सो जॉर्ज साइमन ओम, ही गेव अस दिस रिलेशन बिटवीन वी एंड आई. ठीक है, उन्होंने क्या किया, ये हम देख लें. उन्होंने क्या किया, एक कंडक्टर लिया, ये कॉपर का कंडक्टर है. मान लो मैं इसको ए बी नाम दे देता हूँ. ओके, तो अब इस कंडक्टर को उन्होंने एक सेल से कनेक्ट किया. ओके, सपोज इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल जो डिफरेंस क्रिएट करेगा वो V है. ओके, तो आपको मालूम है, अच्छा ये तो बताया ही नहीं. ओके, पिछले उसमें हम भूल गए कि एक पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वी यूज़ अ इंस्ट्रूमेंट नोन एज वोल्ट मीटर. ओके, वी यूज़ अ इंस्ट्रूमेंट नोन एज voltmeter. You can see it over here. Okay, and it is always connected in parallel. ठीक है, जहाँ जिन इन दो एंड्स पे मेजर करना है तो इन दो एंड्स के पैरेलल हम उसको कनेक्ट करेंगे तो वो हमें बता देगा कि इन दोनों एंड्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है. ओके, इट्स कॉल्ड अ वोल्टमीटर. इट्स कॉल्ड अ वोल्टमीटर एंड वी यूज इट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस. एमीटर आपको ऑलरेडी बताया हुआ था, सर्किट में कितना करंट है उसको मेजर करने के लिए हम एक एमीटर यूज़ करते हैं. ठीक है, तो एमीटर का मैंने बताया था हमें इंश्योर करना होता है कि पॉजिटिव टर्मिनल सेल या बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है. सिमिलरली वोल्ट मीटर का भी आप हमेशा ये ध्यान रखोगे
कि उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो सेल या बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। ओके, शिंगारिका पूछ रही है कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I या I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अगर हम ये कहें तो कोनो गड़बड़ है का? ओके, विल डिस्कस दैट व्हेन यू स्टार्ट डिस्कसिंग, यू विल गेट टू नो दैट। ओके, अब देखो, नाउ व्हाट आई डू इज, जॉर्ज साइमन ओम ने क्या करा कि उन्होंने एक सेल लगाया और करंट चेक करा। ओके, यहाँ पे वो करंट दिखा रहा है कि इस कंडक्टर के थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है। ओके, एंड जॉर्ज साइमन ओम टैबुलेटेड इट। ओके, उन्होंने टैबुलेशन करा, एक तरफ कितना मेरा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड था और कितना मेरा करंट फ्लो करा इन द कंडक्टर। ओके, अब उन्होंने इसको रिप्लेस करके अब इसमें 2 सेल लगा दिए। ओके, विच मीन्स अगर ये पहला वाला 2 वोल्ट का था तो अब 2 सेल हो गए तो वो 4 वोल्ट का हो गया। ठीक है, उन्होंने करंट नोट करा, तो पहले केस में 2 वोल्ट था तो उन्होंने नोट करा, मान लो कि 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब उन्होंने 2 सेल लगा दिए तो आपको मालूम है कि उसका पोटेंशियल डिफरेंस डबल हो गया। ओके, तो अब उन्होंने करंट नोट करा तो उन्होंने देखा कि करंट भी डबल हो गया। अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने 3 सेल लगा दिए। ओके, अब उन्होंने 3 सेल लगा दिए, 3 सेल लगा दिए तो वो 6 वोल्ट हो जाएगा। अब उन्होंने क्या देखा कि करंट भी 3 गुना हो गया। ओके, विच मीन्स उन्होंने ये ऑब्जर्व करा कि जो करंट इन द सर्किट है, जो करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है। अब देखो, हमने डेरिवेशन, शिंगारिका तेरा सवाल आ रहा है, ठीक है, कि पहले मैं सेल लगाऊंगा तब मेरा करंट आएगा। ओके, तो उन्होंने ये देखा कि जो भी करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है वो उस कंडक्टर के एंड्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जा रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, अंडरस्टूड? यस, नो? ओके, शिंगारिका सेज ओके। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या करा, ओके, तो अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने प्लॉट करा। ओके, VI ग्राफ, वी कॉल इट अ VI ग्राफ, VI ग्राफ। ओके, यहाँ पे हमने Y एक्सिस पे V लिया है और X एक्सिस पे I लिया है, करंट लिया है। तो ही प्लॉटेड दिस VI ग्राफ। तो जो मैंने बताया, आप देखो 2 वोल्ट पे 1 एम्पियर करंट आ रहा था, तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। सिमिलरली जब उन्होंने 2 सेल्स लगा दिए, 4 वोल्ट हो गया, तो अब हमारा करंट 2 एम्पियर आ रहा था। ओके, और जब 3 सेल्स लगा दिए, यानी कि जब पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट्स हो गया, ओके, तो आप देख रहे हो कि करंट 3 एम्पियर्स हो गया। ओके, तो उन्होंने इसको जब जोड़ा तो वी गेट अ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन। ऑब्वियस है कि जब मैं कंडक्टर के दोनों एंड्स में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाऊंगा तो कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। ओके, तो 0 0। तो जब मैं इस ग्राफ को बनाता हूं तो आई गेट अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओके, और मैं क्या देखता हूं, जैसा कि मैंने बताया कि वो प्रोपोर्शनल है। ओके, सो लेट्स जस्ट फाइंड आउट व्हाट दैट इट इज। ओके, सो अब मैं जब देखता हूं, ओके, तो मैं क्या देख रहा हूं कि V by I, okay, 4 by 2 is equal to 2. Okay, V by I, 6 by 3 is equal to 2. Okay, and 2 by 1 is equal to 2. तो मैं देख रहा हूँ कि मुझे जो V बटा I है वो हमेशा एक कांस्टेंट के बराबर मिल रहा है, मुझे हमेशा एक कांस्टेंट के बराबर मिल रहा है। ओके, नाउ व्हाट ही डज इज ही रिप्लेसेस इट विद अनदर मटेरियल। ओके, अब उन्होंने, मान लो हम क्या ले लें, टंगस्टन ले लें मान लो। ओके, और अब हमने सेम सब कुछ किया। हमने पहले 1 सेल लगाया, केवल 0.5 एम्पियर करंट गया। जब मैंने 2 सेल लगा दिए तो 1 एम्पियर करंट गया, और जब हमने तीनों सेल लगा दिए तो 6 एम्पियर करंट गया। ओके, अब मैं दूसरे केस में देखता हूँ। ओके, तो मेरा रेशियोज क्या आ रहा है, जब हमारा 2 वोल्ट था, ओके, तो 0.5 करंट गया। ओके, विच मीन्स दिस इज इक्वल टू 4। और सेकेंड केस में जब 4 वोल्ट हो गया तो ये 1 था, विच मीन्स इट इज़ अगेन इक्वल टू 4। और जब 6 हो गया तो इट इज़ करंट जो जा रहा था 1.5, विच मीन्स इट इज़ अगेन इक्वल टू 4। ओके, तो यहाँ पे भी V बाई आई इज इक्वल टू हमें कांस्टेंट मिल रहा है। ओके, इस केस में हम इसको C2 कहते हैं, C2 इज इक्वल टू 4। ओके, और पहले वाले केस में हमारा C1 है, C1 इज इक्वल टू 2। ओके, तो अब हम
उन्होंने क्या करा, उन्होंने नेक्स्ट कंपैरिजन करा कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए करंट में और इसमें क्या रिलेशनशिप है। तो उन्होंने देखा कि अगर ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है तो कांस्टेंट कम आ रहा है। यू कैन सी इट ओवर हियर। अगर ज़्यादा काम करना ही बंद कर देता है। अगर ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है तो कांस्टेंट कम आ रहा है, और जब ये कांस्टेंट बड़ा हो जा रहा है तब ये करंट जो फ्लो कर रहा है वो कम हो जा रहा है। सबको दिख रहा है? जब ये कांस्टेंट देखो ज़्यादा हो गया तो फॉर द सेम 2 वोल्ट्स के लिए केवल 0.5 फ्लो कर रहा है। ऑन द अदर हैंड जब कांस्टेंट छोटा है तो 2 वोल्ट्स के लिए 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। ओके, सिमिलरली 4 वोल्ट के लिए यहाँ पे केवल 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, कांस्टेंट मेरा ज़्यादा है। वहीं पे 4 वोल्ट के लिए यहाँ पे मेरा 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, मेरा कांस्टेंट कम है। तो उन्होंने इस कांस्टेंट को नाम दिया R। ओके, he called this resistance. He called this a constant R. Okay, which means the resistance. Okay, resistance ज़्यादा होगी तो करंट कम फ्लो करेगा, रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। ओके, तो रिलेशनशिप क्या निकली कि जो करंट फ्लो कर रहा है, जो I करंट है जो फ्लो कर रहा है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V. Okay, the potential difference across its ends. I can also write that V is directly proportional to I. Okay, and to bring in a constant, I have seen the relationship. ठीक है, देखो जब मेरा 4 वोल्ट था, ओके, जब मेरा 4 वोल्ट था और मेरा जो करंट था, जब मेरा करंट था वो 2 एम्पियर था, ओके, तो मेरा जो कांस्टेंट था वो 2 था। तो ओके, आपको रिलेशनशिप दिख रहा है। ओके, तो उन्होंने बोला कि हम इस कांस्टेंट को लेके आते हैं, ये रेजिस्टेंस हम इसको बोलेंगे, ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है जो मटेरियल ऑफ द कंडक्टर देता है, ओके, तो दैट इज इक्वल टू आर एंड इट विल बी अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन मटेरियल ऑफ गिवन प्रोपोर्शंस एट अ गिवन टेम्परेचर। ओके, सो ही सेड दैट वी कैन राइट इट V इज इक्वल टू आई आर। ओके, दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन for Ohm's law, where V is the voltage or the potential difference across the ends of the conductor. Okay, I is the amount of current that is flowing in the conductor, and R is the resistance. Everybody understood? Yes or no? Okay, अब इसकी जो experimental verification है वो आपके syllabus से हट गई है। Okay, the experimental verification is no more in your syllabus. Everybody understood? जल्दी से बताओ। केवल चिंगारिका ही अब जवाब दे रही है, okay sir, got it. What about the others? Have you understood? You tell me. In the meantime, I read the statement given in your book. Okay, the statement of Ohm's law says, according to Ohm's law, the current flowing in a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends, which means I is directly proportional to V. वो ये कह रहा है, the current flowing in the conductor is directly proportional to the potential difference applied across its end. Okay, provided the physical quantities such as temperature, etc. remain constant. Okay, अब मैं अगर इसमें I की वैल्यू मैं 1 एम्पियर लेता हूँ, ओके, तो व्हाट डज माई V बिकम, तो मेरा V जो हो जाता है वो R के बराबर हो जाता है। तो अगर मैं 1 एम्पियर करंट लेता हूँ तो इस केस में क्या हो जाता है, जो मेरा V है दैट इज़ इक्वल टू R, गॉट इट, दैट इज़ इक्वल टू R। ओके, तो हम क्या कहते हैं, what resistance of a conductor is numerically equal to the potential difference across its ends for the flow of unit charge. ठीक है, ओके, मतलब मेरे कंडक्टर से अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो मेरा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है उसके बराबर होगा। ओके, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज न्यूमेरिकली equal to the potential difference applied across its ends when the current flowing through it is 1 ampere. Correct? Now I am on to the last topic which I had planned today. Today I have done it in quite a good pace. Okay,
तो इसके बाद हम लास्ट टॉपिक पे जाएंगे। तो अब हमें पता चल गया कि V इज इक्वल टू आई आर, विच मीन्स R इज इक्वल टू V बाय I। ओके, तो हम इसका यूनिट डिराइव कर लें। हमें मालूम है कि जो वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है उसका वोल्ट है यूनिट, और जो करंट है उसका यूनिट है एम्पियर। ओके, तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या हो गया? वोल्ट पर एम्पियर। ओके, और इसको हम क्या बोला? हमने जॉन साइमन ओम के ऑनर में इसको ओम बोला। वी डिनोटेड बाय अ ओमेगा। ओके, दिस इज कॉल्ड अ ओमेगा एंड वी कॉल इट ओम। ओके, सो 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर। ओके, और हमने डेफिनेशन ऑलरेडी समझ ली कि अगर कंडक्टर के एंड्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट है और उसमें से केवल 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो हम कहते हैं कि जो कंडक्टर रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है वो 1 ओम है। एवरीबॉडी अंडरस्टूड? सिंपल, समझ में आ गया सबको? ओके, so I'll read out the definition to you once again before finishing this class. Okay, the resistance offered by a conductor is said to be 1 ohm if 1 ampere current flows through it when the potential difference across its end is 1 volt. Okay, और आखिरी टॉपिक जो मैंने अभी बोला था कि डिस्कस करेंगे वो क्या है? वो है कंडक्टेंस। ओके, अब भैया कंडक्टेंस क्या है? कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा है। ओके, which means conductance is the reciprocal of resistance। ठीक है, तो अगर मैं उसका रेसिप्रोकल लूँगा तो वो कंडक्टर कितना करंट को हेल्प करेगा उसके थ्रू जाने में, वो हो जाएगा। ओके, तो अगर इसका यूनिट ओम था, ओके, तो पहले उसका यूनिट ओम का उल्टा यानी मो लेते थे, MHO, लेकिन आजकल हम सीमेन लेते हैं। ओके, और वी राइट ओम इनवर्स। ओके, दिस इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। SIE लिखा, SEI लिखा, SIE। ओके, and it is also somewhere in some places written as ohm inverse. Earlier we used to use mho, MHO, but now it is no more used. Correct? That finishes today's class. Okay, so that's all for today's class. मैं बहुत speed से गया आज. Okay, and I finished my class 4 minutes earlier. Thank you very much. Bye bye. See you. आज बड़ा मज़े से मैंने जल्दी क्लास ख़त्म कर ली. 3 मिनट पहले आपको bye bye कह रहा हूँ. Bye. Thank you very much. So please, next class when you come, you should revise all of these things and come so that we can go into numericals and then to the next topic. धन्यवाद शिंगारिका. चलो, बाय बाय।